हाय एवरीवन, वेलकम टू गार्डनिंग क्लासेस। जी हाँ, अब आप सुनने जा रहे हैं गार्डनिंग क्लासेस की बातें। जी हाँ, दिस डिस्कशन एंड टॉपिक विल बी only on gardening. Sometimes maybe on other aspect, but major focus will be on gardening. So let me welcome you all to this platform and we'll talk about basic aspects of gardening today. We all believe that we know gardening, but when we go to the area where we have planted and you see yourself, then you yourself come into doubt that really do I know gardening? यही होता है, बहुतों के साथ होता है। हमें लगता है कि हमें गार्डनिंग आती है, या हम बोलते हैं हमें बेसिक आती है, हमें तो एडवांस सीखना है, बट जो कमी रह जाती है वो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन में ही रह जाती है। सो आई टॉक यू इन डिटेल अबाउट ऑल बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग one by one. So keep in touch. Goodbye for now. प्लांटिंग सीजन। किस टाइप के पौधों को, कौन से पौधों को कब प्लांट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है गार्डनिंग का। यू शुड नो व्हेन टू प्लांट अ सैपलिंग. In general, there are three seasons of gardening. First season is winter, that is September, October according to Delhi weather. Second one is spring, that is Feb, March in Delhi. And the third one is rainy season, that is monsoon, that comes in July, August. तो ये तीन सीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं. इन नेक्स्ट पोर्शंस विल नो अबाउट व्हेन टू प्लांट, हाउ टू प्लांट. After knowing about gardening, space required for gardening, types and forms of gardening, now we will talk about soil manure mix. Basically, what kind of media is good for plant that plays an important role in soil drainage. Since accumulation of water in soil root zone becomes biggest problem in case of pot gardening. तो ये जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि अगर आप नॉर्मल क्ले पॉट है आपका और उसमें आप 50% सॉइल और 50% मैन्योर डाल देते हैं, मैन्योर किसी भी टाइप का हो सकता है, वो हम नेक्स्ट चर्चा में बातें करेंगे कितने टाइप्स ऑफ मैन्योर होते हैं, कंपोस्ट क्या होते हैं, इन सब पे. बट अभी just to share you that in general 50% of soil and manure, that is primarily of cow dung manure, is good for majority of soils. Particularly we are talking about loamy sand soil, the soil which contains some portion of clay and some portion of sand. That is good for pot gardening in general. You have to choose different kind of soil mix for different categories of plants. Say for example, for cacti and succulents, the soil should be porous, loose, that contains more proportion of sand, whereas in case of some plants which require more water, they require more quantity of clay. So thanks for now, bye.